So to print the keys only, suppose we have one dictionary like this. Okay, so we can use for loop. जैसे हम लोग लिस्ट में करते हैं for I N D. Okay, now what the values of I will be all the keys. Okay, if you use I, then it will print all the keys. Okay, or print print. Okay, so जैसे लिस्ट में होता है. Okay, suppose we have one list. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 10. And if you use the for loop for this, ओके क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? तबसुम Yes sir, numbers वो नंबर्स प्रिंट होंगे. ओके, सो बिकॉज आई की वैल्यू क्या होगी? ये कंप्लीट लिस्ट होती है. ठीक है, सेम वे ऐसे ही हम लोग किस में करते हैं? सपोज वी हैव वन स्ट्रिंग hello. Okay, and if you use I in ls, then print I. Okay, now क्या प्रिंट होगा? hello. हेलो प्रिंट होगा. सूरज, Yes, sir. हेलो प्रिंट होगा? Yes. नहीं, इट विल प्रिंट वन इंडिविजुअल लेटर्स. ठीक है, ऐसे. So it takes 1111 letter. Okay, HELL. Okay, so in the same way, suppose हम लोग यही concept कहाँ पर apply करते हैं? When we apply for the dictionary, so it will print the keys only. Okay, क्या print करता है? Only key print करेगा. So ये आपको देगा, क्या देगा? Roll number, class and address. Okay, so it will not print all the letters. सभी सारी values print नहीं करता है. It print the keys only. ठीक है. The next thing, अब सपोज हमारे पास की अवेलेबल है, सो वी कैन प्रिंट द वैल्यूज बाय यूजिंग द कीज. कर सकते हैं, कीज के थ्रू वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं ना. कैसे प्रिंट करेंगे? सो टू प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम द कीज वी यूज, कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट की इक्वल टू आई. ठीक है, क्या प्रिंट होगा? दिस वन, की इक्वल टू रोल नंबर, क्लास एंड एड्रेस. वैल्यू प्रिंट करना है, देन अगेन वी यूज कॉमा, वैल्यू इक्वल टू, okay, in double quotes, value equal to, then we use what we use, d square bracket and then I, because I के पास क्या है? की है. Okay, and d is your dictionary. So in a square bracket, if you pass this one, then we get this. So key equal to roll number, value equal to 20, key equal to class, value equal to 11. ठीक है. It's okay. Yes sir. Now next thing, suppose we have a dictionary again. So there are functions also. Okay, functions hai. Suppose I want to print only the keys without any loop, then we can use the function d.keys. Keys is a function which print all the keys, roll number, class and address. Okay, so to list only the keys, it will print. Now so there are multiple values in a list, है ना, ये list है. So आप इसको क्या कर सकते हैं? Suppose you want to print individually, so we can use for loop, id.keys, and then print I. So it will print all the keys individually. Okay. Yes sir. Now the next thing, suppose I want to print only the values without any keys.
So there is a function values. Okay, so it print the values 20, 11, लोनावाला क्या प्रिंट करता है? वैल्यू प्रिंट करता है. ठीक है. सो ना टू प्रिंट इंडिविजुअल वैल्यूज हम लोग क्या यूज करेंगे? इन डी डॉट वैल्यूज. Okay, so it print individual values 20, 11, लोनावाला. It's okay. Yes, sir. Now there is the next. So d dot values print values only. Keys print keys only. Suppose I want to print both at the same time. So we have one more function d dot items. क्या है? Print d dot items. So it prints both. ठीक है? Value की वैल्यू. सो यहाँ पर ये किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ टपल. ओके, और ये सारा लिस्ट में. Now, to print separately, what we use for I in d dot items. Okay, print. So if you print like this, so it print the tuple only. This one. ये print करेगा, ये print करेगा, ये print करेगा. Okay, because I की value क्या आ रही है? Same आ रही है. अब suppose I use the separate one more variable in I comma j. Okay, then I can print also I comma j. Then it will print separate values. Roll number 20, class 11, address लोनावाला. ये क्लियर हो रहा है कैसे हुआ? स्वराज, Yes, sir. ये डबल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हो रहा है? सो जनरली हो क्या रहा है? ठीक है, इन केस ऑफ देखो नॉर्मली इफ यू यूज वन वेरिएबल. ओके, लिसन, सी व्हाट वी हैव वन टपल ऑफ द टू वैल्यूज. ओके, इसको हम लोग टपल बोलते हैं. इफ द वैल्यूज इन अ राउंड ब्रैकेट इट मीन्स इट्स अ टपल. ओके, and all round brackets are in a square brackets. It means a list containing the tuples and the tuple contains both the keys and values. ठीक है. सो ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पर? ठीक है, आई कॉमन जे. सो इफ यू यूज आई इक्वल टू, सपोज हमने 20 यूज किया. ठीक है, देन इट्स ओके. देन सपोज हमने किया प्रिंट आई, so it print 20. But suppose if you use one more variable with comma. Okay, so अभी क्या बन गया? ये बन गया टपल. So जब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं तो ये सेम एज इट इज प्रिंट करता है 20, 30. ठीक है, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये हमने किस में असाइन कर दिया? वी मेक आई एंड जे एज ए सिंगल वैल्यू. बट सपोज इस टपल को अनपेक करना है. अनपेक करना इट मीन सपोज आई वांट टू प्रिंट बोथ वैल्यूज इंडिविजुअली. सो आई कैन यूज वन मोर वेरिएबल हियर I comma j equal to 20 comma 30. So ये स्टेटमेंट क्या करता है? इट विल प्रिंट I 20 ओनली. और देन सपोज अगेन मैंने यहाँ पर यूज किया j, नाउ इट विल प्रिंट इंडिविजुअल वैल्यू. क्या? हाँ दक्ष, दक्ष दक्ष स्वराज, स्वराज. Yes, sir. ये क्लियर है कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. सो फॉर द टू वैल्यूज, सपोज यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको. ओके, दैट जनरेटर कैनॉट अनपिक.
So for the two values I comma j, okay, 20 comma 30. So यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव टपल, okay, 20 comma 30 है. So if you put tuple here, so it will take roll number, किसके पास चला जाएगा, I के पास चला जाएगा, and J के पास क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा. ठीक है. So if a particular value is a tuple, so we can unpack like this. So we can print the individual value I comma j, 20 30. So it will print the individual values. So यहाँ पर क्या हो रहा है, we have a list of tuples. ठीक है. So if suppose मैं यहाँ पर यूज करूँ, मैंने यहाँ पर यूज किया 30, 40. नाउ क्या प्रिंट होगा, आई एम जे क्या प्रिंट होगा, लिस्ट. ओके, यहाँ पर ये लिस्ट इट्स टपल सिंगल वैल्यू है. नाउ इट प्रिंट 30. ओके, सो क्या चाहिए यहाँ पर, लिस्ट चाहिए, बिकॉज लिस्ट कैन बी यूज इन अ लूप. द लिस्ट कैन बी इटरेट. ठीक है, either we use the tuple or the list. So अब इस लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे उसके लिए रन होगा. So फर्स्ट वैल्यू I के पास क्या जाएगी, 30, एंड J के पास क्या चला जाएगा, 40 चला जाएगा. If suppose we have one more, यहाँ पर suppose यहाँ पर हो गया हमारे पास 50, 60. So now it will print two values, 30 40 and 50 60. ठीक है. So in the same case item के पास क्या है, ये सारी चीजें. So if you use this, then it will print all the values like this. ठीक है, ये clear Yes, है. sir. So ये ऑलरेडी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. ओनली कीज प्रिंट करना है, कीज एंड वैल्यूज प्रिंट करना है. ओनली कीज प्रिंट किया, ठीक है, एंट्री किए हुए हैं. वैल्यूज प्रिंट करना है नाउ. ओके, दोनों वैल्यू प्रिंट करना है. नाउ द फंक्शन ऑफ द डिक्शनरीज, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिक्शनरीज. तो फंक्शंस क्या क्या हैं, लेन. ओके, सो लेन फंक्शंस हम लोग सब में यूज करते हैं. इफ यू यूज इन अ लिस्ट, सो व्हाट इट रिटर्न, सो लिस्ट रिटर्न्स नंबर ऑफ आइटम्स इन अ list. ठीक है. In the same case, if we use len for the string, then it return number of characters in a string. ठीक है. So if suppose हम लोग use in dictionary, if you use len in a dictionary, it return the number of key value pairs. Number of key value pairs. ठीक है. So कितने key value pairs हैं हमारे पास, 3. So it returns number of key value pairs. Okay, key value pairs. If you use, ये clear है, len. Yes, sir. Okay, next is clear. So clear, to delete all the elements we use clear functions. Next is clear functions. Okay, so suppose आपको क्या करना है, लिस्ट को empty करना है, sorry, डिक्शनरी को empty करना है, so we can use the clear functions. So the clear function deletes all the elements, or we can use it's used to delete all the key value pairs. Okay, so एक हो गया len, एक हो गया clear. ठीक. नेक्स्ट, सो क्लियर फंक्शन क्या करता है, आपकी डिक्शनरी को एम्प्टी बनाता है. ठीक है, इट मीन्स इट डिलीट्स ऑल द एलिमेंट्स. नेक्स्ट फंक्शन इज गेट फंक्शन. सो गेट सर फंक्शन, लेन क्या करता है? लैन रिटर्न. लेन देखो क्या करता है, क्या लिखा हुआ है, इट रिटर्न ऑफ की वैल्यू पेयर्स. नो नहीं, रीड इट एज ए नंबर. नंबर. व्हाट इज रिटर्न,
रिटर्न नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके, कितने हैं थ्री की वैल्यू पेयर्स? कितने हैं स्वराज? थ्री 3 हैं। ओके, सो रिटर्न 3। कितने पेयर्स हैं वो रिटर्न करता है? 1 2 एंड 3 पेयर्स। ओके सर। ठीक है, देन clear deletes all the elements. Get function is used to return a value of a key. ठीक है, क्या करता है? वैल्यू ऑफ ए की रिटर्न करता है। जैसे हमने ये मेथड यूज किया था, सपोज हमारे पास की है और देन वैल्यू प्रिंट करना है, सो वी कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट जस्ट लाइक इंडेक्सिंग मेथड। ठीक है, बट की गेट इज अनदर मेथड थ्रू विच वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए की। सो आपको गेट फंक्शन को क्या देना है? वी रिटर्न गेट फंक्शन को क्या देना है? की देना है। सो सपोज आपने डी डॉट गेट रोल नंबर दिया, तो ये आपको क्या देगा? इट विल रिटर्न 20। ठीक है, क्लास दिया तो क्या मिलेगा? 11। एड्रेस दिया तो क्या मिलेगा? लोनावला। ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, लेट सपोज हमने कोई की दिया, ठीक है, डी डॉट गेट फोन नंबर। नाउ फोन नंबर इज नॉट इन है, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो इट रिटर्न नन। व्हाट इट रिटर्न? इट रिटर्न नन। बट इंडेक्सिंग मेथड क्या जनरेट करती है? इट जनरेट एरर। ठीक है, क्या जनरेट करता है? इट जनरेट्स एरर।